Namaskar. You have an excellent Vice Chancellor. आते ही होमवर्क दे दिया, 2 किताब थमा दी। I have had the benefit, experience of being Chancellor of several universities. पर यहाँ आकर कुछ ज़्यादा अच्छा महसूस हो रहा है। I am grateful to my very old friend, extremely talented, with huge experience, both in government, organizations, and parliament. पर सोचा नहीं था वो मेरे लिए मुश्किल पैदा करेंगे। इतना जबरदस्त भाषण दे दिया कि सक्सीडिंग वक्ता के लिए तो परेशानी है। As a very distinguished former president of the union, he generated a connect and created problems for me. Be a little kind to me. As your Chancellor, I seek to connect with all of you. Professor Balram Pani ji, Professor Prakash Singh ji, Dr. Vikas Gupta ji, Professor Neera Agnimitra ji, Professor K.P. Singh, members of the faculty, professors, teachers, and most important, dear students. I am happy to be here when this university is having a milestone development. 100 years in the journey of any organization is a major event. For Delhi University, which is in the capital of the largest democracy, this event has far more significance. Congratulations for this great journey, traversing lot many developments as indicated by the Vice Chancellor. I have gone through the agenda that has been set out, and I have no doubt that the deliberations that will take place will cover critical issues that will focus on infrastructure, information, and innovation. इन तीनों के बिना आज के दिन काम चलना मुश्किल है। I can tell you, dear friends, boys and girls, India is on the rise as never before. Rise of the country is unstoppable. I'll give you my own instance. When I was elected to Parliament in 1989, we members of Parliament were given 50 gas connections in a year. And that was a great power in our hand. Imagine, more than 180 million gas connections were made available free to needy households. Imagine where have we been. I recollect the day in 1979 when I went to a bank to get a loan of 6,000 rupees so that I could start my library. The bank manager was kind. I could get that loan. And now, you have an idea in your mind. You need to be a young person. Money is not a problem.
And that is why we can boast today of having unicorns more than that of China. Our startups have baffled the world. Our youngsters have done miracles. All this has taken place because there has been transformation in our policy ecosystem. Now, all efforts are being made to ensure everyone should be in a position to exploit his or her talent to the utmost optimum level. और इस प्रकार के हालात होने का मतलब है कि भारत का जो स्थान सदियों पहले था, वी आर ऑन वे टू रिक्लेमिंग इट. आज के दिन कितना, व्हाट इज अ मैटर ऑफ प्राइड टू बी एन इंडियन. दुनिया में कहीं भी जाइए, भारतीय और भारतीयता का सम्मान एक अलग तरीके से है. आवर लीडरशिप, आवर डिप्लोमेट्स and our functionaries, they talk only one language, and that is the language which is in the interest of our country. The voice of Indian Prime Minister is heard in world fora more than ever before. All this has come about because India has a great demographic dividend. The future belongs to the youngsters. They have to shape the destiny of this country. It is their direction, their attitude that will define course of history. और ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है. जो चीजें पहले सोच नहीं सकते थे, जिनके बारे में विचार नहीं कर सकते थे, सोचते समय लगता था ये संभव कैसे होगा, वो जमीनी हकीकत है. अंदाजा लगाइए, क्या कोई कल्पना कर सकता है कि 1 अप्रैल 2020 से 80 करोड़ जनता को लगातार मुफ्त में खाना दिया जा रहा है, आज भी दिया जा रहा है. दुनिया का कोई देश सोच नहीं सकता. आप ये देखिए, फर्स्ट डोज, सेकंड डोज एंड बूस्टर डोज, 200 करोड़ वैक्सीन लगाना आसान काम है क्या? बहुत मुश्किल है. ये संभव हुआ है. पहले क्या देखते थे, लंबी लाइन लगती थी, बिजली का बिल जमा कराना है और किसी चीज का उपयोग करना है. पर टेक्नोलॉजी कितनी आ गई है, this has become a matter of past. Let us take pride that our country is rising as no other country at the moment. मुझे एक बात की बड़ी चिंता है और मैं चिंतन करता रहता हूं कि कुछ लोगों को हमारे जो बढ़ोतरी हो रही है उससे परेशानी क्या है. Why can't they digest the growth story of India? Why can't they digest that Bharat is on the rise? मुझे बड़ी परेशानी होती है. जब कोविड महामारी थी और दुनिया के रोबस्ट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स हो गए थे. आप सब जागरूक हो, ब्रिलियंट माइंड्स ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स. यू नो व्हाट हैपेंड इन मैनहट्टन, यू नो व्हाट हैपेंड इन द कॉरिडोर्स ऑफ लंदन हॉस्पिटल्स, यू नो व्हाट हैपेंड इन यूरोप. पर वहां जो कहते हैं ना, हमारे विजय गोयल जी ने तो यहां बहुत कुछ देखा है. टंगी लगाना कहते हैं ना, टंगी लगाना खेलते समय. अपने यहां टंगी लगाने की जो प्रवृत्ति है वो दुनिया में और कहीं नहीं देखी.
And this will be taken in high decibel. All the cylinders will be firing. Time has come when youth of the country, students in particular, boys and girls, become authentic opinion makers. Because what has been done now is to bring about a transformation where an ordinary person of this country can make impactful presence in every walk of life. मैंने महसूस किया है, अध्ययन किया है, 34 साल के बाद एक क्रांतिकारी कदम उठाया गया बाय वे ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी. इस पॉलिसी का इवोल्यूशन was after taking into consideration the various competing points of view and inputs from all stakeholders. This policy will be a game changer. पहली बार भारतीयता को पॉलिसी ने समझा है. पहली बार इस पॉलिसी ने हमारे सोच को एक नया आयाम दिया है. मातृभाषा की ओर संकेत देकर हमारी प्रतिभा को उज्ज्वलित करने का एक नया रास्ता दिखाया है. ऐसी स्थिति में जब हम देखते हैं कि इस बदलाव के मुख्य केंद्र क्या हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर. सड़क देख लो, एयरपोर्ट देख लो, पोर्ट देख लो. इंफ्रास्ट्रक्चर जो कई बार विजिबल नहीं है अबाउट टेक्नोलॉजी, उसको देख लो. उस इंफ्रास्ट्रक्चर का नतीजा देखिए. आप में से जो लोग दिल्ली से थोड़ा बाहर जाते हैं, मेरठ जाने का रास्ता कितना कम हो गया है. दिल्ली के कहीं भी निकल जाइए, जो सोचा नहीं वो हो चुका है. वंदे मातरम ट्रेन हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रेन हैं. पर यदि अगर वंदे मातरम ट्रेन के चलते समय थोड़ी सी खरोंच आ गई, वो मेन स्टोरी है. कब बदलेंगे? When will we change? उस मोर की तरह नहीं होना है जो नाचता तो बहुत अच्छी तरह है, पर पांव की तरफ देखकर उसको रोना आता है. We are losing sense of proportion. दुनिया इतना बड़ा संकट झेल रही है, दुनिया के देशों में परेशानी है, अन्न की परेशानी है, ग्रोथ कम है. ऐसी परिस्थिति में इंडिया इज अ शाइनिंग स्टार. And all this because our people are talented, they are hard working. और अब क्या है, हाल के कुछ वर्षों में नीतियों में इतना सकारात्मक बदलाव आया है. पहले भी होता ही था, पर जब स्वच्छ भारत अभियान आया तो हर आदमी जागरूक हो गया. गांधी जी के सपनों का भारत हमारे सामने नजर आने लग गया. एंड दिस हैज बिकम अ ग्रेट इंडस्ट्री ऑल्सो. पहले क्या था, आप में से अधिकांश लोग जानते हैं, एंड बॉयज एंड गर्ल्स आर वेरी वेल इन्फॉर्म्ड. जब भी कोई भारतीय पहले विदेश में जाता था, कभी भी उसने केले का छिलका सड़क पर नहीं फेंका, कभी भी रोड का नियम नहीं तोड़ा. पर देश में आते ही उस समय
हमारा अधिकार था। केले का उपयोग किया है तो गाड़ी से फट बाहर फेंको। रोड इज आवर गार्बेज कैन। यह संस्कृति बदली है। इसकी शुरुआत जब भारत के प्रधानमंत्री ने की तो उस समय कुछ लोगों ने टिप्पणी की। अपने उस देश के वासी हैं और जहां महात्मा गांधी जी ने इतने अच्छे सिद्धांतों के बारे में कहा है, लेट अस नेवर रिडिक्यूल अ गुड आइडिया। एक नई संस्कृति का जन्म हो रहा है कि मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा। माई वे इज द हाईवे। What I say is right. Boys and girls, give up this idea. We must always listen to the other point of view. The other point of view is very important. Let us not be intolerant of that point of view. And मेरा अनुभव कहता है, more often than not, the other point of view is the correct point of view. आज के दिन यदि अगर हम देखें विकास की यात्रा, तो उस विकास की यात्रा के आयाम इतने जबरदस्त हैं कि हर व्यक्ति को अपना उज्जवल भविष्य नजर आता है। जब भाई विजय गोयल ने कहा कि दुनिया में कोई ऐसी संस्था नहीं है which can claim to be a global giant and does not have an Indian genius at the head of it. अब देखिए, मेरे को तो ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट लग रहा है। India has surpassed China in creating unicorns, and our unicorns in fiscal dimension are in billions. ये मैं आपको बता दूं, ये जितना जो कुछ हो रहा है, ये कन्वेंशनल और ट्रेडिशनल लोग नहीं कर रहे हैं, ये आप जैसे यंग माइंड्स कर रहे हैं, ब्रिलियंट बॉयज एंड गर्ल्स कर रहे हैं। And you are defining new economic ecosystem of this country. मुझे ये जानकर अति प्रसन्नता है कि दिल्ली विश्वविद्यालय celebrating centenary year, it has an excellent track record. The value system exemplifies the best that can possibly be imagined. फिर भी मैं ये कहूंगा, we must set very high benchmark. जब हमारे अतीत में देखते हैं, हमें याद आता है नालंदा. We were a global hub. Our ancient universities give us a direction कि दुनिया ने हमारी तरफ क्या देखा था. I do hope, and I am confident after listening to your learned Vice Chancellor, that no effort will be spared to ensure the university is on incremental trajectory of growth so that it becomes an institute of excellence and eminence at a global level. Infrastructure is important, but a university is known by the commitment of its faculty. And I have no difficulty in asserting, without fear of contradiction, that Gurujan, members of the faculty of Delhi University, are outstanding. They are one of the best in the country.
And this trend will result in our great growth. Atmanirbhar Bharat, a new concept, is taking shape during Azadi Ka Amrit Mahotsav. We must focus in a very different manner on Azadi Ka Amrit Mahotsav. We need to know our history. You go to any part of this country, you will find unsung heroes. You will come across that, yes, that particular person played a critical role in our freedom movement. We have to be thoroughly updated about those who sacrificed their lives to make our lives comfortable. I would not take more time, but say two things in particular. A nation is defined by the student community. Any country that has to go up, its student community will define it. Education alone is a great equalizer. Infrastructure is easy. Innovation is difficult. Industry can be achieved. Entrepreneurship is tough. And these are the virtues which our student community has. I therefore appeal to you. One, please have highest respect for your elders, for your teachers, and for your parents. Please always keep your Rashtra before everything else. Our national interest is supreme. Our national interest is not optional. It is not negotiable. It is the only way out. And lastly, our Indian Constitution has prescription of fundamental duties. Everyone is aware of the rights. Everyone is aware fundamental rights. To serve Bharat Ma, to see this nation becomes Vishwaguru, which it will for sure, let each one of us focus on fundamental duties. And the moment we will read those fundamental duties, आपको लगेगा पालन करना बहुत आसान है और पालन करना कितना सुखद है, कितना जरूरी है और देश को कितनी ताकत देगा. I am extremely delighted and happy to be here at this occasion, and I would end that all that my dear friend Vijay Goyal has said about me should be taken with a pinch of salt. Thank you so much. Thank you, sir, for your words of wisdom. I'm sure all of us will benefit a lot from the wisdom shared by Sir.